Okay, and then we have a resistance here. This is grounded, and we are applying V input here, and the feedback is given by a diode. Not feedback is given by is feedback circuit. We have a diode. Okay, this is my V output. So now this resistance is R. Okay, now calculate V output. What V output will come? Suppose a current I is flowing here. Okay, so I will be what? I will be V input minus 0 upon R. Okay, and we know that whenever diode in forward bias, तो so क्लास अभी स्टार्ट हुआ है ना? अभी स्टार्ट हुआ है. Okay, just मैंने सर्किट बनाया है, and then you have to calculate the V output of this circuit. Okay, now I know, so whenever diode is forward bias, okay, so we know diode equation. What is diode equation? I forward current is IS exponential minus V, okay, whatever voltage you are applying, VF upon N VT, okay, or QV by KT minus 1. Okay, so if I want to take ये माइनस है क्या यहाँ पर प्लस होगा शायद प्लस है ओके प्लस है ओके नाउ इफ दिस वोल्टेज इज positive, okay, so I can neglect this term. Okay, so I can write my IF equal to IS, okay, exponential VF upon N VT, and from this equation I can calculate what is VF. Okay, so VF will be log of IF upon IS, okay, and eta VT. Okay, so what is eta? Eta is emission coefficient. Okay, so जरूर नहीं कि eta लिखो, eta वन भी कर सकते हो इस इक्वेशन में. So now I know my forward voltage. Okay, so from this circuit, this is ground, so this will be ground. So I can write 0 minus V naught, okay, is equal to what? VF. 0 minus V naught, okay, equal to VF. Okay, that means my V naught will be now minus VF. Okay, so I can write now V naught is equal to minus VF. VF already we have, and beta T log of IF upon IS. Okay, and I know this current is same. Okay, what current is flowing here? So I equal to IF equal to I equal to V input upon R. So I can write here instead minus and VT log IF की जगह रख देंगे V input R. So V input upon R IS. Okay, so my V output is minus VT, okay, eta VT, okay, log of V input upon R IS, and we know what is VT. VT is KT upon Q log V input R IS. This is your formula for V naught. Okay, and if you want, you can remove this eta. Okay, so simply your V naught will be minus KT upon Q log V input upon R IS. So since your V output depends on logarithm of V input, okay, so that's why this circuit is called logarithmic amplifier. Okay, now the same circuit, okay, I'm using here a diode. Okay, if instead of this diode, if I use a transistor, okay, then see what will happen. We can achieve same function with this transistor also. Okay, so ये सबने कर लिया, मिटा दो इसको. हाँ सर हाँ
सर ये अगर मतलब ऊपर में डायोड लगा रहेगा तो पता चलेगा लॉगरिथमिक हाँ, एम्पलीफायर है। अगर ऐसे निकाल लिया ना तुमने, अभी तुमको सॉल्व करने के लिए वो बोलेगा तुम ऐसे निकालोगे तो लॉग में आ रहा है, तो लॉगरिथम में आ रहा है। ठीक है। अच्छा। नहीं मतलब पहचानने के लिए ऐसा। हाँ, पहचानने के लिए तुमको पता चल ही जाएगा सर्किट, ये याद कर लेना, ऐसा सर्किट लॉगरिथम एम्पलीफायर है ये। Now suppose if I remove this one diode from here, okay, and instead of diode, if I put transistor here, so say this is my transistor, okay, so say this is my base, okay, this is my emitter, okay, this is the collector, this is the collector C, okay, this is the base, and base is grounded, base is grounded, and this is my emitter, IE current flowing here, okay, this IE current flowing here, this is my emitter, okay. So now what will happen, okay, in this circuit? Now if I want to get V output, how can I write V output? So some current is coming from here, okay, this current will be simply now IC, it's coming to collector. Now one thing you have to understand, that here this is 0 and this collector also is at virtual ground, okay, and between this here B and E, okay, B and E, you have voltage drop between base and emitter, that is called VB, okay. Now this is grounded collector and your base is also grounded, okay, that means now this is short, हमने बेस और ग्राउंड को शॉर्ट कर दिया, तो 3 टर्मिनल थे वो अब क्या बन गया, एक ही टर्मिनल, 2 टर्मिनल बन गया, ये ग्राउंड कर दिया, ठीक है, अब ये शॉर्ट हो गया पूरा। तो अभी क्या होगा कि ये पूरा ट्रांजिस्टर की तरह काम नहीं करेगा, इट विल एक्ट एज अ डायोड, ओके, ये जो टर्मिनल काम करेंगे इट विल एक्ट एज अ डायोड, एंड this base and emitter will act as diode, and if I want to write diode current IE, okay, so I can write diode सर current, हाँ सर एक बार फिर से हाँ, एक्सप्लेन कर देते हैं लॉजिक क्या मतलब क्या। भी ये ग्राउंड है, यस सर। ये ग्राउंड है, दो बेस तरफ, ग्राउंड है। और ये वर्चुअल ग्राउंड है यस कलेक्टर, सर। दोनों 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 ग्राउंड से ही है, दोनों एक ही टर्मिनल नहीं यस बन गया, यस सर ये दोनों का दोनों एक, ग्राउंड जीरो हाँ बी दोनों जीरो है। कनेक्टेड है, दोनों, हाँ हाँ, दोनों दोनों एक ही टर्मिनल बन गया, ठीक है। तो यस अभी सर। ये अब शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, खाली एक ही जंक्शन बचा, ओके, बी सो एक ही जंक्शन बचा, दैट इज NPN, सो दिस बिकम डायोड नाउ, ओके, एंड ओके सर। डायोड में से जो करंट फ्लो होता है, ये तो शॉर्ट हो गया, द करंट विल बी नाउ IS, ओके, IS एक्सपोनेंशियल Q VB अपॉन KT, ओके, मैं ईटा लिख नहीं रहा हूँ, -1, सो QVB और VB बाई VT हो जाएगा, ओके, एंड अब ये जो करंट आ रहा है IC, दैट द सेम करंट लाइक IE, ओके, सो आई कैन राइट दैट दिस V input minus 0 upon R, that is equal to I equal to IC, that equal to IE, okay, so my IC is same, IC is equal to IE, that is IS exponential QVB upon KT -1, okay. Now I want to get my V output, okay, so V output क्या है, ये ground है, okay, so if I suppose this is ground, suppose I write equation here, so I write ground, this is, I'll start from ground, plus VBE, okay, then plus V naught equals to 0, KVL, so from here I'll get my V naught equal to minus VBE, okay, so the V naught is minus VBE, now you want VBE, so you have to get VBE from this equation, okay, so if I write this is IC,
IS plus 1 exponential QBB upon KT. Okay, so this become IC plus IS. This become now IC plus IS upon IS. ओके सेम पहले जैसे किया वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल इनको बताने के लिए. QVB upon KT. Now we know this is saturation current, reverse current, and it's a collector current, forward current. This is a very high compared to this one, so you can neglect IS in compared to IC. So this is equal to what? This is equal to simply IC. Okay, IC upon IS. Okay, equal to exponential QVB upon KT. Okay, so from here I can get VB is equal to log of IC upon IS. Okay, and KT by Q. Okay, and my सर 1 को नेग्लेक्ट क्यों करा? V naught will be simply सर भी आपका जैसे वॉइस ब्रेक हो रहा है मैंने उनको तो यहाँ पे निकल कर सकता था. सर, बार बार वॉइस Okay. और आपकी वीडियो So रुक रही है सर. VB is very अच्छा, अभी साफ आ रहा है, अभी सर क्लियर है? नहीं आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है. सर ब्लर आ रहा है सर, बार बार आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है सर. एक मिनट. वीडियो भी रुक रही है सर. मुझे तो नहीं दिखा रहा है इधर कुछ प्रॉब्लम. नहीं आ रहा है क्या? आपकी बैंडविड्थ भी लो नो बता रहा सर. सर ब्लर हो रहा है सर. बट क्यों हो रहा है? सर अब ठीक है सर. जस्ट मिनट. अब ठीक है सर. अच्छा उसको सेट कर दो, फिर फोकस चला जाएगा. गिव मी 1 minute. सेटिंग सेम है. Okay. So now I want this V naught. V naught simply minus VB. This is minus KT upon Q. Okay. Log of IC upon IS. Okay. And IC value we already know. V input by R. So my V naught will be minus KT by Q log. Okay. This is V input by R. V input by R IS. तो सेम इक्वेशन आ गई लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की. तो एग्जाम में चाहे डायोड दिया हुआ हो या ट्रांजिस्टर दिया हुआ हो. ओके, इफ दिस इज टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर दोनों शॉर्ट हैं देन इट इज इक्वल टू डायोड ओनली. ओके, सो यू कैन यूज दिस सेम थिंग. ओके, एंड दिस इज योर लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. ओके, नाउ हाँ सर ये जो डायोड है ये तो सर रिवर्स बायस डायोड है ना? कैसे रिवर्स बायस के हैं? ये एन पी एन. हाँ सर, पीएन पोर्शन तो रिवर्स बायस होता है ट्रांजिस्टर भी में. ये तो शॉर्ट हो गया, दोनों शॉर्ट हो गया. अब यहाँ से करंट तो आ ही रहा है पॉजिटिव से, तो उसको फॉरवर्ड बायस ही करेगा. ये करंट तो यहाँ से तो फ्लो हो ही रहा है. ठीक है, नहीं सर, ये इनपुट तो सर ये लेकिन नॉर्मल बी बी एन पी एन है. ठीक है, जैसे ये शॉर्ट हो गया एन, इसका कोई मतलब नहीं है. करंट शॉर्ट हो जाएगा ना, ये शॉर्ट हो गया तो करंट का इससे मतलब ही नहीं है. करंट जाएगा पी टू एन. अब थोड़ी एन थोड़ी जाएगा व्हेन दिस टर्मिनल है शॉर्ट, तो फिर उसके अंदर से क्यों जाएगा ट्रांजिस्टर के अंदर से? ओके, दिस विल बी ओनली दिस डायोड पी एन. ओके, क्योंकि वायर लगा हुआ है ना, सपोज शॉर्ट का मतलब क्या, एक वायर लगा हुआ है इधर, दोनों ग्राउंड है, इसका मतलब क्या है? हाँ सर, कोई ये पोटेंशियल नहीं है करंट फ्लो करने के लिए. हाँ बस दोनों में पोटेंशियल नहीं है, दोनों ग्राउंड है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं यहाँ पर. जो भी लगाओगे सीधे यहीं से होगा. हाँ सर, बट सर पी जो साइड है वो तो सर ग्राउंडेड है एंड इन साइड तो सर एक वोल्टेज है ये आउटपुट. तो सर आउटपुट तो अभी माइनस से आ रहा है ना, देखो तभी तो करंट फ्लो हो रहा है. अब ये माइनस आ रहा है, अभी जीरो
तभी तो हाँ। वो फॉरवर्ड बायस है। ओके, वो इसी का साइन ही है कि माइनस आ रहा है। कई बार एग्जाम में लोग ऐसे प्रेस करके आते हैं, वो माइनस ही आया, तभी तभी तो बता रहा हूँ माइनस हो। ये सब बाकी सब क्वांटिटी पॉजिटिव है, टी क्यू पॉजिटिव, लॉग पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, इसका मतलब क्या है, माइनस लगा दे तो पूरा नेगेटिव हो गया ये। ठीक है। यस सर, ठीक है। So now this is was logarithmic amplifier. Okay, simply we want exponent amplifier. Okay, so that means anti logarithmic amplifier. Anti logarithmic amplifier. Okay, और इसको we call it, just give me 1 minute. Okay, so suppose exponent amplifier or exponential amplifier. Okay, or exponential amplifier. Okay, so same सर इसकी exactly. हाँ, सर this is इसकी mine. आउटपुट टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हाँ, बस इसका आउटपुट जो मिलेगा वो आपको एक्सपोनेंशियल टर्म में मिलेगा। एंड सर्किट भी सेम ही है, खाली डायोड को नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया। सो वन वी इनपुट, ओके, एंड देन यू दिस इज ग्राउंडेड एंड दिस इज माय voltage. Here we have RL and V naught. Okay, and here we have this R1. ओके, तो बस लगा दो, आपका केवीएल लगा दो। ओके, एंड निकालो करंट कितना आएगा। Say suppose this is your, say this is voltage across diode is V forward. Okay, this is grounded, this is automatically grounded. So from here we can see V input minus 0 is VF. Okay, so here I can write V input minus 0 is equal to VF. So V input equal to VF. तो पता चली गया हमको। Okay, and this current is 0 minus V naught upon R1 I. Okay, so R1. Okay, so and I is coming here, IF. Say this is forward current. Okay, so I can write my, this is equal to IF. Okay, and my V naught will be minus R1 IF. So minus R1. Now you can write, put the value of R1 RF. Okay, so IF value, you know, IF is what? IF is forward current. IS exponential. Okay, Q VF upon VT, Q VF upon, क्या लिखते हैं हम लोग? Q VF upon NVT, VT और NVT. Theta VT, yes sir. Okay, minus सर 1. IF क्यों नहीं 1 होगा हो सर? गया क्या सर? हाँ हाँ, V naught minus R1 IF then equals to minus R1. अभी लिख रहा हूँ, अभी IF का वैल्यू लिख रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, ओके सर। ओके, तो BF अपॉन थीटा Okay. VT होगा ना? ईटा लिखो, चाहे 1 लिखो, इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, हाँ सर, नहीं वो क्यों नहीं होगा सर? हाँ, so IF equal to your IS, you can simply write IS exponential Q VF upon eta सर VT. IF is current across diode ना? हाँ, जो करंट डायोड से आएगा वही तो ऊपर उसका जाएगा इक्वेशन। हाँ सर। ना। So now this will become IS exponential Q VF upon eta VT. Okay, हाँ सर, एक मिनट, हाँ बोलो। सर ये क्यों नहीं होगा शायद इक्वेशन में? सर BF अपॉन थीटा VT होता है हाँ, तो VF KT वाली फॉर्म में। हाँ, तो क्यू नहीं आएगा। अच्छा, क्यू Yes, नहीं sir, आएगा yes, ना, sir. बस हाँ, क्यू नहीं आएगा। थैंक यू। दिस VF, ओके, सो क्यू नहीं आएगा इधर, थीटा VT VF. Okay, so simply now you can write
minus R1 IS exponential VF equal to V input. This become V input eta VT. Okay, so your V naught is equal to minus R1 IS exponential V input upon eta VT. So exponential V input, V output is exponential of V input. That's why it is called exponential or anti-logarithmic amplifier. Okay. अब सेम सर्किट को we can do it by using transistor. Okay. Suppose यहाँ पे हमने आउटपुट पे एक्स्ट्रा लोड रजिस्टर क्यों लगाया? कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जहाँ वोल्टेज मेजर करोगे ओपन सर्किट पे वोल्टेज मेजर कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आरएल पे मेजर करो, उसको कोई इशू नहीं है। सर -1 को नेगेट क्यों किया कहाँ पे? सर? थर्ड इक्वेशन बी फॉरवर्ड लगा रहे हैं। ओके, अब ये Yes, आइडियल sir. है तो बी इनपुट लगेगा। ओके, so Yes, v sir. v if vf is greater than vt, okay, so in Yes, that case this exponential term is very high compared to 1. That's why we can neglect this one. Exponential term है ना। okay, Okay, so sir. vt तो बहुत कम होता है ना। vt कितना होता है? vt is around मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी वोल्टेज लगाओगे 0.3 0.2 0.5 वोल्ट, वो उसकी कंपेरिजन तो ज्यादा ही है। so that we can this one we can neglect one. Now same circuit I want to realize using transistor. Okay, this is minus plus, okay, inverting terminal. Here we have a transistor. Okay, this is grounded, and here I have V input. Okay, and here IC is coming. Okay, sir, this current is there, and here we have resistance. Okay, V output, and this is grounded. Okay, so NPN transistor is there. This is NPN transistor, and this is NPN transistor. Okay, NPN transistor. This is a base. This is a emitter. This is a collector. Okay, so NPN is there, so current will go like this. Okay, so this current will flow. Now apply circuit में KVL apply करो and calculate what you can calculate using KCL. This is 0. Okay, so now V output 0. लिखो इक्वेशन को, कैसे लिखोगे? So what I can write, if I current is flowing here, okay, so V output will be simply V out V naught minus 0. Okay, कितना जाएगा upon R, that will be I, and that same current will form IC. Okay, so this is virtual ground, so your collector and base are short circuited. Okay, so only this is working. So this is V base to emitter VBE. Okay, so ground to this terminal VBE, and this terminal to ground V minus VBE. So V input क्या हो जाएगा? Minus VBE. Yes, sir. Okay, so now this is your I. Okay, so I can write. sir. हाँ, शायद प्लस VB आएगा। माइनस आएगा ना, भी उल्टा है ना भी। ये तो अब केवी लगाओ, सिंपल लगा, केवी लगा के देखो, बी क्या आ जाएगा? प्लस वीबी, ओके, एंड प्लस वी इनपुट इक्वल्स टू 0. ओके, सो क्या आ जाएगा? वी इनपुट माइनस वीबी। सर अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो VB पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर तो है, एनपीएन। तो सर अगर इस तरीके से जाएंगे तो सर ई पहले आएगा ना, तो इसका मतलब VB नेगेटिव आएगा। भी ये आपका बेस है, ये बेस है, ये एमिटर है।
हाँ, तो हमेशा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बेस टू एमीटर होता है ना. हाँ सर. ओके, so this is VB, I think this is VB सर only. तो सर बीबी को हम लोग पॉजिटिव लेते थे, तो ये ऐसा ही होगा ना कि एक बैटरी कनेक्टेड है तो पहले उसका नेगेटिव टर्मिनल लोग एनकाउंटर करेंगे, राइट? नहीं, तुम तो सिंपल अपना केवी लगाओ ना. अभी वी इनपुट क्या है, साइन वो पता चल जाएगा, जो भी आएगा उसको उल्टा जाएगा. अभी तो हमारा वी इनपुट है, ठीक है. यहाँ से तो ये दिख रहा है ना भी, यहाँ से तो ये ग्राउंड है, ये पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ठीक है. इसके इसके कंपैरिजन में ये माइनस, इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव है, तो साइन तो उल्टा ही है इनका दोनों का, ठीक है. सो इफ यू राइट नाउ वी आउटपुट, that will be R IC, okay, and V output, okay, R IC is equal to IE, and we know I is what? I is exponential Q VB upon KT, okay, minus 1, and V naught R exponential, this is minus V input, so minus Q V input upon KT minus 1, okay. So this will become your V output, okay. So last वाले में क्या आया था, जब लास्ट किया था उसमें प्लस आया था माइनस आया था? when we did last one, The output equals to minus IS R1 exponential V input upon eta VT. just let me check on the अच्छा, तो उसमें R इधर माइनस में आया था ना, इधर माइनस में है. कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. IRIS here, minus IRS and Q positive here input, okay, and then if you take this one, okay, कोई issue नहीं, ठीक. Just So minus Q कौन सा है? जी नहीं सर, वो हो गया क्लियर, मुझे वो माइनस का लगा. So this was your logarithmic and anti-logarithmic amplifiers, okay. Now we want to rectify also, okay, we want to use our thing as a rectifier also. So put the heading now, precision amplifier. Okay. So precision amplifier का मतलब क्या होता है? For example, if I have a diode, okay, and here I have a resistance, okay, and I am applying V input. I am taking V output here. So if I draw the transfer function, okay, that means V output versus V input. If I draw, so V output can be positive also, V output can be negative also, okay. So if V output is positive, so this will be short circuited, okay. This will be short circuited, current will flow, this will be short circuited, and you get V output equal to V input. So for positive values, I'll get always my V output equal to V input, okay, for this circuit. ये रिवर्स हो जाएगा ना डायोड सर? पॉजिटिव के लिए तो फॉरवर्ड बायस होगा ना, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ V इनपुट के लिए फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस होते ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. यस सर. करंट फ्लो कर जाएगा. तो ये जो V इनपुट है दैट इज इक्वल टू V आउटपुट, या बीच में रेजिस्टेंस, बीच में कुछ है ही नहीं, ओके, ठीक है. यस सर. ओके, तो ये तो तब है जब ये आइडियल है, ओके. एंड इफ यू टेक V रिवर्स, then this circuit will become open, no current will flow, and you'll get 0, okay. You get, this is V output, so V output is 0, okay. Here V output is what? V output is V input in normal diode. Now if this diode, same diode, okay, is not ideal, okay, iske andar if you want to apply some forward bias voltage VD,
then what will happen? If you apply this one, this V naught, okay, and this is V input, and this if is some voltage VD, then this whole this cycle, whole this range, your V output will be 0, and here your V output will be V input. Okay, for example, this is 0.7. तो जब तक 0.7 नहीं लगाओगे तब तक ये तो फॉरवर्ड बायस हो गए नहीं. ओके, 0.7 के बाद ही 0.7 के बाद ही ये फॉरवर्ड बायस होगा, एंड यू गेट V आउटपुट टू V इनपुट. अगर वोल्टेज आपकी नेगेटिव है या 0.7 से कम है, in that case this will act as an open circuit and you will get zero current in the circuit. Clear है? Yes sir. Now the problem is क्या है? अगर आपका जो V इनपुट है वो 0.7 से कम है, okay, your V output is less than 0.7, then you cannot rectify that signals, okay, that small signals, okay, which are less than the diode's cutoff voltage, okay, those voltages, microvolts, okay, those voltages cannot be rectified using this diode circuit. Okay, so if there are small signals 0. microvolts, 500 microvolt hai, 400 microvolt hai, okay, if those signal, if you want to rectify, okay, then we need to use this precision amplifier, okay, open circuit. So क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट करिए सर, आप जो बोले. जो if your input voltages are less than diode cutoff voltages, okay, if V input is less than diode cutoff voltage, okay, then those signal or those voltages cannot be rectified, okay, with this circuit. So small signals को, small voltages को rectify करना है. For that we use this open circuit. तो open circuit क्या है इसका? नीचे वाला मत रब करना सर. हाँ. So we have a transistor plus, okay, and here we are applying V input, okay, and this is your diode here, and here we have the resistance, okay, so this resistance is R, and here we are taking V output, okay. Now क्या अब इस सर्किट में क्या होगा? Okay, so if this circuit, suppose हम इस पे लगा रहे हैं, यहाँ पे अबे हमारा आउटपुट हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारा जो ओपन का आउटपुट है वो यहाँ पर आएगा, उसको हम बोलते हैं V01, ओके. तो अगर ये डायोड, ओके, अगर ये डायोड कंडक्टिंग है, if this diode is conducting, ओके, तब क्या होगा? भी ये तो आपका ये टर्मिनल आपका वोल्टेज फ्लोवर टाइप का सर्किट है, वोल्टेज फ्लोवर टाइप का सर्किट है, मतलब आपका इस सर्किट में कोई करंट जाएगा ही नहीं, इस सर्किट के अंदर कोई करंट जाएगा ही नहीं. तो जो भी करंट आएगा यहाँ से, that has to pass through this one, इस तरह जाएगा, ओके. दैट मींस सर नाउ ये समझ नहीं आया क्या बोले सर आप. ये मतलब आपको पता है इनपुट के अंदर, ओपन के इनपुट के अंदर कोई करंट जाता नहीं ना, यस सर. करंट जीरो होता है.
इनपुट टर्मिनल Yes, में sir. करंट जीरो होता है। ओके, जीरो होता है। तो सपोज इस सर्किट में से जो भी करंट आ रहा है तो यहाँ तो जाएगा नहीं, वो Yes, sir. यहाँ तो जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अच्छा, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब आपका क्या है, अगर ये डायोड कंडक्टिंग है दैट मींस योर V नॉट इज पॉजिटिव, V नॉट इज पॉजिटिव if diode conducting, okay, if say D1, if diode D1 is conducting, okay, then V naught is positive। एक चीज क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है, अब ये वोल्टेज V नॉट है, ये वोल्टेज V नॉट है, ये कहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर। यहाँ पर ये V इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पर टर्मिनल पे क्या होता है, V प्लस होता है और ये V माइनस होता है, तो योर V माइनस इज इक्वल टू व्हाट, V नॉट। और आइडियल केस में क्या होता है, V प्लस इक्वल टू V माइनस V इक्वल टू minus. V नॉट, V तो होता ही है। Yes, P sir. क्या है, V नॉट इक्वल टू V माइनस है तो V प्लस इक्वल होगा। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. अगर ये पॉजिटिव है तो आपको ये V इनपुट को क्या होना पड़ेगा, V इनपुट इज व्हाट, हाँ, so V input is equal to V minus, okay, which is equal to V naught, so your V input has to be positive अगर डायोड कंडक्ट करना है तो। अगर डायोड कंडक्ट हो रहा है तो योर V input should be positive, okay, that means जैसे ही आप यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा and you will get a current in the circuit, okay, and you'll get the same IV characteristics if I assume this is the ideal, okay, और वैसे भी है, so V input, this is V output, okay, and this is V input, this is P output is equal to V input, okay, so positive cycle you'll get this one, okay। Now suppose you are applying negative bias, okay, तब क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, अगर सर मुझे ये चीज तो समझ में है, फिर आपने V इनपुट ग्रेटर देन 0 कैसे लिख दिया सर, ये चीज नहीं आया समझ में। ये यस सर। V आपका V नॉट ग्रेटर देन 0 है यस सर। और V नॉट इज इक्वल टू माइनस V नॉट, यस सर। और माइनस V नॉट इक्वल टू माइनस V इनपुट, यस सर। तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव नहीं होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ सपोज आई एम रिमूविंग दिस वन, ओके, नाउ आई एम अप्लाइंग नेगेटिव वोल्टेजेस, ओके, आई एम अप्लाइंग V इनपुट इज लेस देन 0, ओके, तब क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, बताओ। सर नहीं करेगा सर। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे सर नेगेटिव वोल्टेज पहुंच जाएगी और नेगेटिव वोल्टेज तो वो करता ही नहीं है ना सर, कंडक्ट करता ही नहीं है वो। तो सपोज हम मान लेते, हम उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, सो V इनपुट इज नेगेटिव एंड इट इज कंडक्टिंग, ओके, तो जैसे इसको नेगेटिव माना, V इनपुट कंडक्टिंग का करंट यहाँ तो जाएगा नहीं, करंट तो वापस आना इधर ही है, तो V नॉट पॉजिटिव हो गया, V नॉट पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अब V नॉट पॉजिटिव हो गया तो V माइनस पॉजिटिव हो गया, तो V माइनस पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब V प्लस पॉजिटिव हो गया, पर V प्लस पॉजिटिव तो है ही नहीं, हम तो नेगेटिव मान रहे हैं। ये नॉन आइडियल एम्पलीफायर की तरह, व्हाट थिंग, ये नॉन आइडियल एम्पलीफायर में चला जाएगा। नॉन आइडियल नहीं, आप देखो, if you are applying, see you are assuming, see V, if this is a positive, okay, and this is conducting, then your input should have to be positive, okay, now I am telling, suppose I am applying V input here, and so already I told you if it is positive this should be positive. For example, I am telling you, okay, this is positive and say let this is negative and still it is conducting, तो जैसे कंडक्ट होगा तो वापस ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, अब करंट यहाँ तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा, V नॉट पॉजिटिव तो वापस V नेगेटिव पॉजिटिव, नाउ दे शुड बी सेम, okay, so V input should be also positive, but we are assuming V input is negative, that means our assumption is wrong, okay, so what will happen for V input, this circuit will get open, okay, और जब भी सर्किट ओपन होता है तब क्या होता है, whenever सर्किट ओपन हो गया, ओके,
यहाँ पे कोई करंट जाएगा नहीं. So whenever V input is negative, your V output will be 0. Okay, and that is okay. So this will become, you get 0 here. But now problem is that when this become, now this loop become open. Now it's open loop amplifier. So what will happen? Now this output V01, जैसे ही थोड़ा सिग्नल लगाओगे, this V output will get saturate. Okay, समझ में आ रहा है? Now you are applying V positive, V negative, V positive, V negative, V positive, V negative. Okay, V positive में कंडक्ट कर रहा है, V negative में ये saturation mode में चला जा रहा है. Okay, again you are applying V input. So when you are applying V input, V in signal, V in a positive negative cycle. Okay, so this is going in negative cycle. This is going to saturation. और saturation से आने में उसको टाइम लगता है, वापस नॉर्मल पोजीशन में आने में टाइम लगता है. So this will reduce your speed of this device. Okay, so this is a precision amplifier. That's why we use some improved version of precision amplifier instead of this one. Okay, so what is that next circuit? सर हाँ, सर मैं मतलब V इनपुट अगर नेगेटिव होगा तो हाँ, यहाँ तक तो मैं जान गया कि मतलब ये नेगेटिव होगा तो V हाँ, माइनस भी नेगेटिव होगा. हाँ. फिर V इन नेगेटिव इसीलिए हो रहा है कि V माइनस इक्वल्स टू V प्लस, इसलिए माइनस भी ये दोनों बराबर नीचे, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव होगा. ओके, यस सर. पर ये V नॉट तो नेगेटिव हो नहीं सकता ना, क्योंकि करंट को तो ऐसे जाना पड़ेगा, वहां तो जा नहीं सकता है. सर तो यहाँ करंट जा रहा है तो V नॉट फिर पॉजिटिव कैसा हो जा रहा है सर? ये 0 है, यस तो सर. करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव ज्यादा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज जाएगा ना. यस सर. यस सर. So that's अच्छा. why this is not possible. Okay, ओहो. that's why V अब input के लिए समझ गया. this will not conduct. Okay, this will act ओके as a सर. open circuit. Okay, ओके सर. now इस सर्किट की प्रॉब्लम क्या है? इस सर्किट का स्पीड कम है. Okay, because this is going again and again saturation. So what we'll do, we'll modify this amplifier with 2 diodes. Okay, so now इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना. It is a little bit complicated. Okay, so improved. Okay, improved half wave, that was half wave precision amplifier. Okay, now improved half wave precision amplifier. So how they improve? Okay, they have this minus plus. Okay, we are applying V input here. This is grounded. Okay, and this is diode is there. Here we have one more diode. Okay, and this is R2 and V नॉट. और इस बार क्या है, फीडबैक भी दे दिया है, क्लोज लूप गेन दे दिया है, एक फीडबैक दे दिया है यहाँ से ताकि वो क्लोज लूप गेन हो जाए. R2 भी दे दिया है. ओके, हियर सो R2 यहाँ नहीं दिया, इधर दे दिया. ओके, so I know here is V output of amplifier is V01 and I am measuring V0 here. Okay, my signal here V0, and here we have a resistance R. Okay, and this is V input. Okay, now this is inverting mode amplifier. Okay, so if I'm applying positive here, this is 0, this is 0. If I'm applying positive here, you get negative here. Okay, if you're applying positive here, you get negative here. So this diode will be conducting. Okay, so when you're applying V input equal to positive, so case first. Okay, when V input is positive, only D1, say this is D1 diode conducts. Okay, only D1 diode conducts. Okay, now आप बोलोगे नहीं सर D2 भी कनेक्ट करना चाहिए. Okay,
मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे D2 भी कंडक्ट करना चाहिए भी, ये नेगेटिव है तो ठीक है, हो सकता है ये इससे ज्यादा नेगेटिव हो तो उसको फॉरवर्ड बायस कर देगा, है कि नहीं है? हाँ सर। सर ये जो अगर बीन पॉजिटिव है तो D1 कंडक्ट, ये प्रीवियस वाले से आदमी किया है ना, भाई अब देखो ना, अभी तो ये इसका क्या ये तो लॉजिक? अभी तो ये क्लोज लूप गेन है ना अब तो यस जब आप सर। पॉजिटिव लगाते हो तो यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है, R1 R2 ये हमारा वी आउटपुट, ये नहीं ये वाला है, ये वाला बात कर रहा हूँ, ये अच्छा नेगेटिव होते अच्छा। ही ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है, यस क्योंकि सर ये तो यस जीरो सर। है, ये हाँ जीरो हाँ। है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ओके। ओके अब सर। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं सर, ये ऐसा नहीं है, ये तो फॉरवर्ड बायस है, पर जब पॉजिटिव पे ये भी फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ओके, तो हम मान लेते हैं फॉरवर्ड बायस है। सपोज मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देता हूँ, ओके, प्लस माइनस 0.7, ओके, दिस इज प्लस माइनस 0.7, ओके। सो इफ आई अप्लाई नाउ दिस वन, तो मेरा वी नॉट कितना आएगा, सपोज दिस इज प्लस माइनस, दिस इज 0.7, ओके, then VD2 also 0.7, okay, and this should be equal to my V naught 1, so V naught 1, so my V naught 1 will come now minus 1.4, जो आना ही चाहिए माइनस में, माइनस 1.4 वोल्ट्स, ओके। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो करंट कैसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है, यहाँ जीरो है, यहाँ पे जीरो है और यहाँ यस पे सर। नेगेटिव है, तो करंट ऐसे आ रहा है अभी, ठीक है। यस और यस अगर सर। और अगर ये डायोड कंडक्टिंग है तो करंट ऐसे तो करंट ऐसे जाएगा, तो इस यस यहाँ पे सर। करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है, और वो करंट क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव। नेगेटिव कैसे भी, एक जीरो है, एक माइनस वोल्टेज वी है, नेगेटिव है। हाँ, तो करंट कितना आएगा, जीरो, करंट का डिफरेंस होता है ना, जीरो माइनस वी अपॉन आर, करंट ऐसे नहीं होता है, यस सर, प्लस हो गया, यस तो होगा सर। करंट तो पॉजिटिव होगा, करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो करंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे करंट आ रहा है, पॉजिटिव करंट आ रहा है, सपोज हाँ दो सर। दो दो सपोज 2 मिली एम्पियर है, पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, ठीक है। अभी ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये नेगेटिव है, यहाँ से भी करंट आएगा, यहाँ से भी कुछ पॉजिटिव करंट आएगा, से 3 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर कुछ भी है, 1 मिली एम्पियर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और अभी ये नेगेटिव है, ये जीरो है, यहाँ से भी करंट आएगा, कितना आ गया, सपोज 1 मिली एम्पियर है, अब सारे पॉजिटिव करंट हो गए, तो केसीएल का वायलेशन नहीं हो गया, सम ऑफ द नोड्स, ओके, इनकमिंग आउटकमिंग करंट शुड बी जीरो, तो ये सब इनकमिंग करंट है टुवर्ड्स नोड, उनका सम जीरो होना चाहिए, अब सारी पॉजिटिव करंट है तो उनका सम जीरो कैसे होगा, ओके। सो मैं एक लाइन लिख देता हूं, वो आपको याद रखनी है कि जब व्हेन वीएन इज पॉजिटिव, खाली डायोड D1 ही क्यों कंडक्ट करेगा, D2 क्यों नहीं करेगा, सो व्हेन here I have a diode, okay, this is diode, so this is diode, okay, so when V input is positive, only D1 diode conducts, okay. Suppose if we assume, if we assume D2 is also conducting, if D2 is also conducting, then क्या होगा, that means all the three currents, okay, entering node V0, all the three currents entering node V0 are positive, okay, which is violation of Kirchhoff current law, okay. इसलिए whenever Vn is positive, your current will flow like this, it will go inside, okay. So this is the case when V input is positive, your current will start here, यहाँ से start होगा and then it will go inside, okay.
So this is for V positive. Now what will happen V negative? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये ओपन हो गया. अगर when V input is positive, ये ओपन हो गया. Okay, this is 0, this is 0. So now V naught is 0. Okay, so that means for V input you get V greater than 0, you get V output is equal to 0. तो आपकी अगर V input पॉजिटिव है, आपको V आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. ठीक है सर हाँ अगर V इनपुट पॉजिटिव है तो हाँ. एक और तो डायरेक्शन है करंट का जाने का, इसका कौन R2 सा? के थ्रू, R2 के थ्रू. R2 के वेरी गुड. R2 के थ्रू भी है. Okay, हाँ. but it will not go through R2, it will follow through diode only. Why सर? क्योंकि डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना. डायोड का जो, अगर सपोज मैं इसको अभी आइडियल डायोड बोल दूं, तो यहाँ पे Yes, तो sir. शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, ड्रॉप तो होगा नहीं. यस सर. ठीक है, तो फिर तो इसका मतलब वो हाँ. पाथ तो हमेशा यही फॉलो करेगा. डायोड तो का तो सर इसको, R2 लगाने का तब क्या फायदा है सर? वो तो इसको क्लोज लूप गेन किया है ना इसको. अभी जो अच्छा हम जो अच्छा. सैचुरेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, हमको सैचुरेशन इफेक्ट की जो प्रॉब्लम आ रही थी, पहले हमारा क्या हो रहा यस सर. था, लास्ट केस में हमारा ओपन हो जा रहा था ओपन. तो ओपन होते ही क्या होता है, वो सैचुरेशन में चला जाता है, उससे स्पीड कम हो जाती है. अब की ये ओपन लूप गेन में जाएगा ही नहीं, सैचुरेट होगा ही नहीं. तो रेक्टिफाई तो करेगा, बट सैचुरेशन नहीं होगा तो स्पीड कम नहीं होगा इसका. यही फर्क है बस ओके. दोनों में. ठीक है. अच्छा सर एक और चीज, आपने कहा कि V इनपुट के थ्रू अगर डायोड के थ्रू जाएगा तो V01 नेगेटिव होगा, तो इसका रीजन ये हाँ, है कि जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, इसीलिए तो नेगेटिव होगा ना V01. करंट 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 का हमेशा डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है ना. यस सर. यस सर. ठीक है. ओके सर. तो नाउ सपोज आई एम अप्लाइंग V. हाँ, ये तो हो गया आपका दिस वन. सर हाँ हेलो सर. सर हाँ फिर ये तो R2 में भी करंट नहीं जाएगा सर, इस हिसाब से तो फिर हाँ. तो ऑटो में करंट नहीं आ रहा ना. वो तो ऑटो सर में फिर नहीं जा R2 तो बस हमने जस्ट जस्ट वैसे ही लगा था सर. अभी अभी देखो ना, अभी देखिए कैसे अभी V माइनस देखो तब क्या होता है. अभी अभी काम आएगा ना इसका. अरे ऐसा हो गया. अभी तो लगाया तो उस पर्पज से लगाया होगा. ठीक है. एक तो ये आपको सैचुरेट नहीं होने दे रहा है, और अभी दूसरा केस देखो, अभी मी जब V माइनस इनपुट करेंगे तब देखो क्या होता है. दिस इज नाउ, दिस इज डायोड हियर. ओके, एंड वी हैव डायोड हियर. ओके, नाउ सपोज आई एम अप्लाइंग V इनपुट नेगेटिव. ओके, तो क्या हो जाएगा, V01 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, क्योंकि इन्वर्टिंग है. ओके, सो क्या हो जाएगा अब की बार में, ये पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स ये आपका कट ऑफ हो गया. ओके, ये आपका कट ऑफ हो जाएगा. ओके, सो नाउ करंट की डायरेक्शन क्या होगा. तो करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगा, यहाँ से ये तो ओपन हो जाएगा, ये तो ओपन हो जाएगा. सो करंट विल गो नाउ फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दैट विल गो टू हियर. ओके, सो इस केस में अब क्या बन गया, अभी ये तो हट गया, ये हट गया, तो ये तो क्या हो गया, ये तो सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नहीं हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया. तो और ये आपका क्या हो गया, R1 R2 जैसे पहले होता है, ये ग्राउंडेड, ये तो सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. तो आपका V0 कितना आ जाएगा, V0 आ जाएगा माइनस R2 अपॉन R1 V इनपुट. नहीं क्या, एंड यस सर. और V इनपुट क्या है, नेगेटिव है. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, सो फॉर V आउटपुट, हाँ एक मिनट, V इनपुट पॉजिटिव है, आई एम गेटिंग 0 करंट. ओके, V इनपुट नेगेटिव है, तो नेगेटिव, सपोज ये इक्वल है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस विल बी लाइक दिस. ओके, दैट मींस नेगेटिव के लिए कनेक्ट करेगा, विल गेट आउटपुट, एंड V आउटपुट इज 0 हियर, एंड हियर V आउटपुट इक्वल टू व्हाट, माइनस V इनपुट, माइनस V input if R2 is equal to R1. Okay, हाँ बोलो. सर
एक्चुअली सर यहाँ पे तो सर जो यहाँ पे जो पॉइंट है वर्चुअल ग्राउंड पे वो तो 0 ही होगा सर, हाँ 0 है ना ये, और यहाँ पे V0 हो गया सर यहाँ V0 हो गया, वेरी गुड। पॉइंट। हाँ तो इसी वजह से सर वो कहते हैं वो है क्या कहते तो आप हैं कर फॉर रिवर्स वाइज में। भैया वैसे भी देख लो, भैया वैसे भी देखो आप भी ये तो हाँ ये, सर ये वाला समझ ये वाला गया। देखना पड़ेगा। ये वाला, ओके ओके ये हम नेगेटिव लगाते हैं, ये ओके पॉजिटिव सर होता है, इसकी वजह से ये रिवर्स वाइज हो जाता है और ये ओके फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। ठीक है, सर ओके अब सर अब ये वी ये इनपुट नेगेटिव है तो ये V0 पॉजिटिव है, ये 0 है, यस तो सर करंट तो हमेशा ऐसे ही जाएगा। ओके सर यस सर ये अगर बीन नेगेटिव लगाते हैं तो हाँ V01 पॉजिटिव हो जाता है, हाँ ये इसके पीछे हाँ। का क्या लॉजिक है सर? अरे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो है, क्लोज लूप में है ना ये। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, क्योंकि उसी के बाद पूरा मतलब पॉजिटिव होने से रिवर्स हो जा रहा है, फिर हाँ R2 से जा रहा है। हाँ भी। और अगर तुम उसको मानोगे ना भी, मैंने क्या बताया, जब भी डायोड सर्किट में आ जाए तुम सारे केस मांग के देख लो, ये भी मांग के देख लो, वो भी मांग के देख लो, फिर तुमको पता चल जाएगा एक्चुअली क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दो ही केस हम्म, हैं, वी इनपुट पॉजिटिव होगा तो आपका ये कनेक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, यस सर। तो याद ही कर लो इसको। ठीक है, सर्किट तो यही है, फिक्स है प्रिसिशन एम्पलीफायर का। अगर बस डायोड की डायरेक्शन चेंज कर देगा तो आपका ये ग्राफ चेंज हो जाएगा, बस खाली ग्राफ का डायरेक्शन ओके चेंज हो सर। जाएगा बस, और क्या, बाकी सब सेम ही आएगा। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो सपोज ने बनाया है क्या एक सर्किट, और नहीं बनाया। ओके, सो टुमारो आई विल बी टेकिंग 2 hours क्लास। ओके, अभी जो भी हमारा बचा हुआ है, छोटा बड़ा डेफिनेशन बचा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस भी बचा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको ट्राई करेंगे कि 2 घंटा कल और 1-2 घंटा संडे को लेके 4 घंटे में खत्म करें, नहीं तो फिर मंडे तक खत्म करेंगे इसको। एंड देन वंस दिस फिनिश वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सॉलिड फिजिक्स। ओके यस सर। ओके, ओके सो आई एम सर स्टॉपिंग हियर नाउ। थैंक यू सर थैंक थैंक यू। यू थैंक यू सर सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर।